Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 5. Today we are going to discuss the third lecture of Unit 1. The topic is nerves and reflex actions. Before I discuss the today's topic, I revise the previous lecture, which is the human brain and its parts. The physical appearance of human brain shows it looks like a pinkish grey walnut, and it feels soft and wet, and it has many folds and creases. Human brain is the control center of the body, and it made up of 100 billion nerve cells. Nerves and brain forms the nervous system, and brain needs a continuous supply of oxygen, and it also requires food. If we talk about the size of the brain, so if we talk about the weight of the brain, then we can say that it is about 1200 to 1400 grams. What is the size of the human brain? 1200 to 1400 grams. Now come to the parts of the brain. As we know that the parts of the brain are, the main part of the brain are cerebrum, cerebellum and medulla. There are three main parts of the brain: cerebrum, cerebellum and medulla. Medulla is also called brain stem. If we see the picture, you can see that the topmost part of the brain is called cerebrum, and below the cerebrum there is a cerebellum, and the stem-like structure is called medulla. If we talk about their functions one by one, then we can say that cerebrum perform the voluntary actions like thinking, feelings, decision making, reading, listening, seeing, and many more, like taste and smell, and also you feel the texture of things. If we talk about the another part of the brain, which is cerebellum, it is located below the cerebrum and above the medulla. It controls the balance and movements of the muscles and joints. The another part of the brain is medulla, which is also called the brain stem. The lowest part of the brain is called brain stem. You can see over here. It controls the involuntary actions like breathing, digesting, and beating of heart muscles. Now student, I explain the today's topic, which is nerves. The nerves are those who receive signals from the sense organs and take messages to the brain. Open the page 4. You can see that nerves work like telephone wires. Nerves जो हैं वो टेलीफोन की वायर्स की तरह की तरह हैं. They link every part of the body to a control system, the brain. Nerves work like telephone wires. They link every part of the body to a central control system, the brain. नर्व्स जो हैं वो टेलीफोन की वायर्स की तरह काम करती हैं और वो बॉडी के
एवरी पार्ट को कंट्रोल करती हैं, को सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम यानी ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। अब नर्व्स किससे मिलकर बनी हैं? एज यू नो दैट ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स एंड नर्व्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. Nerves are made up of nerve cells. Which cells? Nerve cells. And are of two kinds. Here I discuss the two kind of nerves. Number one is sensory nerves and second one is motor nerves. You can see that closely. Number one is sensory nerves and number two is motor nerves. What are sensory nerves? Sensory nerves carry signals from the sense organs to the brains or spinal cord. Sensory nerves क्या करती हैं? सिग्नल्स को कैरी करती हैं सेंस ऑर्गन से और ब्रेन तक पहुंचाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड तक. अब what are sense organs? As we discussed earlier, the sense organs are eyes, nose, tongue, ears, and skin. And they perform different functions like eyes are used for seeing, nose for smell, tongue for taste, ear for listening, and skin for touch. These in turn tell the sense organs what they have seen, heard, smelt, tasted or felt. ये organs बताते हैं कि आपने क्या देखा, सुना या सूंघा, चखा और महसूस किया. Nerves from the head and neck region are connected directly to the brain. Nerves दिमाग और गर्दन के इलाके से डायरेक्टली कनेक्ट हैं किससे? आपके ब्रेन के साथ. द नर्व्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. नर्व्स जो हैं वो आपकी, अगर आप ये डायग्राम देखें तो आप ये देखेंगे कि जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ये जो नेक और हेड के रीजन में जितनी भी नर्व्स हैं वो डायरेक्टली आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट हैं. जबकि अदर पूरे बॉडी में जो नेटवर्क आपको नज़र आ रहा है सारा नर्व्स का, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होकर फिर ब्रेन तक कनेक्शन जाता है. क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास है नर्व्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन. और वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डायरेक्ट किसके साथ कनेक्टेड है? ब्रेन के साथ. ये था हमारे पास सेंसरी नर्व्स. मीन्स सेंसरी नर्व्स आपके सिग्नल्स को कैरी करेगा सेंस ऑर्गन से और ब्रेन तक पहुंचाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास मोटर नर्व्स. मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल्स. मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल्स from the brain or spinal cord to the muscles and glands. मोटर नर्व्स क्या करते हैं? आपके सिग्नल्स को सेंड करते हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से. कहाँ पर? मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुँचाते हैं. These signals make muscles move. अब ये सिग्नल्स क्या करते हैं? मसल्स की मूवमेंट. देन इन सिग्नल्स के आने के बाद हमारे मसल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं. The brain, spinal cord, and nerves form a very efficient communication network. Brain, spinal cord और nerves मिलकर एक बहुत ही efficient राब्ते का नेटवर्क बनाते हैं. This network is known as the nervous system. ये नेटवर्क क्या कहलाता है? Nervous system. It controls all actions and movement. और ये तमाम actions और movement को कंट्रोल करता है. Student, look at
this picture. The nerve cells have to be supplied with blood and oxygen in order to keep working efficiently. अब इन नर्व सेल्स को हर वक्त क्या होता है, ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा होता है, देन ही ये वर्क कर पाते हैं, अदरवाइज दे में डाई. अगर ये इन्हें ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, काम करना मीन्स ये ख़त्म हो जाएंगे. Unlike cut and scraped skin or broken bones that mend, the brain cells cannot regrow or mend themselves if they are damaged. अगर ब्रेन सेल डैमेज हो जाते हैं या मीन्स कोई उसकी हड्डी ब्रोकन हो जाती है तो वो कभी भी रीग्रो नहीं हो पाते. दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ़ दे डाई, और ना ही इनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है अगर ये ख़त्म हो जाएं. सो यू मस्ट टेक केयर एंड अवॉइड मैनी हेड इंजरी. इसलिए आप हेड इंजरी से अवॉइड ही करें और अपना ख़ास ख्याल रखें. नाउ स्टूडेंट ओपन पेज 5. रिफ्लेक्स एक्शंस. द वर्ड रिफ्लेक्स एक्शन इज़ एन ऑटोमेटिक एक्शन. ऑटोमेटिक मीन्स खुद ब खुद एक्शन परफॉर्म हो जाना. व्हेन यू स्टेप इन ऑन अ पेन, जब आपका जो पाँव है किसी पेन पे लगता है, योर फुट ऑटोमेटिकली पुल्स अवे. आपके पाँव क्या है, ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ हो जाते हैं. सच एक्शंस वेयर यू डू नॉट स्टॉप टू थिंक आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शंस. ऐसे एक्शंस जिसमें आपकी सोच नहीं रुकती वो क्या है, आपके पास आपके रिफ्लेक्स एक्शंस हैं. इन अदर वर्ड्स एन ऑटोमेटिक एक्शन इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. ये किसके ज़रिए कंट्रोल होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए. मीन्स इनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन से नहीं है बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से है. द नर्व्स एंडिंग in the sole of your foot feel the pain. नर्व्स जो हैं आपके फूट के जो एंड पे जो नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, पेन को फील करती हैं. द मैसेज रीचेज द स्पाइनल कॉर्ड. ये मैसेज कहाँ तक पहुँचता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है. इट इंस्ट्रक्ट्स द मसल ऑफ द फुट. ये मसल जो है पाँव के उसको इंस्ट्रक्शन देता है थ्रू द मोटर नर्व. इट्स मीन इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू पास ऑन हो रही है, मोटर नर्व्स के थ्रू. टू मूव अवे, कि वो वहाँ से हट जाए. मीन्स ऑर्डर किसके थ्रू पास हो रहा है, मोटर नर्व्स के थ्रू, कि वो वहाँ से हट जाए. ऑल दिस इज़ डन इन लेस दैन अ सेकेंड. और ये तमाम कितने टाइम में होता है, सिर्फ 1 सेकेंड से भी कम वक्त लगता है. अब आप चेक करें, ये डायग्राम देखें, आपको नज़र आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड से आपको आपके जो है ये नर्व्स एंडिंग फुट की, वहाँ पर आपको अगर कोई भी नेल लगता है तो वहाँ से मैसेज जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में. तो मोटर नर्व्स के थ्रू आपको फ़ौरन से यानी आप फ़ौरन से उसको मोटर नर्व्स के ज़रिए आपको सिग्नल्स आता है कि आप वहाँ से आप मूव अवे हो जाएं. और ये सारा काम लेस दैन 1 सेकेंड में होता है. स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा नर्व्स एंड रिफ्लेक्स एक्शंस. नर्व्स कैरी करते हैं सिग्नल्स सेंस ऑर्गन से, और मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन. द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन, while the reflex action is an automatic action. Students, I think it's enough today and you can watch it. Thank you so much.